हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर समराइज एज फॉलो। कौन से सबसे पहला है साइंटिफिक स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो रॉबर्ट दहल इन हिज वेल नोन आर्टिकल दैट इज द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने 3 प्रॉब्लम बताए मेनली। कौन से द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद रिव्यू भी हुआ इसका 1947 में, और इन्होंने ऑब्जर्व किया मेनली that there cannot be a science of public administration without a comparative analysis. Okay, so comparative analysis is very important in the public administration. So even James Coleman, an eminent scholar of comparative politics, had observed you cannot be scientific if you are not comparative. Okay, so through comparative analysis of administrative system, new insight into the administrative reality in cross national context are generated, so which can be treated as hypothesis to be tested empirically in order to draw generalization that may apply to any or to they may apply to many or select group of nations. तो इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी की बहुत ज़्यादा आवश्यक है अगर हमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अगर एज अ साइंस डिसिप्लिन देखना है, तो मतलब एज अ साइंटिफिक तरीके से देखना है। तो देन इंटरडिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन। Comparative public administration study have several concepts and methodologies from political science, sociology, economics, anthropology, psychology, and other discipline. Okay, so this has broadened and enriched the study of public administration to a greater extent. A good number of scholars from different disciplines have contributed to the development of comparative public administration. तो ये भी इंटरडिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो ये भी मतलब मेनली यूज होता है इन द इंटरडिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन में, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर। देन स्ट्रेथनिंग इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज कन्फाइंड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर प्रिवेलिंग इन सर्टन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस। The environment of public administration was treated as given. Okay, so there was no focus on this issue. Contemporary comparative public administration has boldly advocated for the adoption of ecological approach to the study of administrative system. This approach has made administrative analysis more realistic and dynamic. So this is also one of the significance of the comparative public administration, strengthening the ecological orientation. Then fourth one is the universalism. Comparative study in public administration have challenged किसको प्रो पैरो पैरोक्लिनिसिज्म in western studies. The non-western world has experienced and nurtured its own administrative reality that has been elaborated by a post of comparative scholar, of whom many of them are Western. The conceptual transformation of even the Western administrative analysis can be attributed to the insight provided by comparative public administration. Then fifth one is the more rational use and foreign assistance. So comparative public administration study have proved to be catalyst to the capacity building of nation receiving aid from international agencies and big power. So utilization of such assistance has become more prudent as a result of insight gained from experience of different nations. Then sixth one is the holistic approach. So grand theories of comparative public administration borrowed from political science, sociology, and anthropology, and many and may not have straightened scientific analysis of administrative reality. Yet they have ex- expanded the vision of public administration by making its scholar and practitioner more aware of need to look at administrative system
from holistic angle. Okay, so this systematic perspective has augmented the understanding of variety of administrative system and their subsystem. So this is also one of the significance of the comparative public administration. Then administrative development, comparative study of public administration have stress improvement in the structure, process and behavior pattern of public administrative system in diverse setting. This approach has highlighted that the process of socio-economic and even political development get speed up through effective administrative practice. Then eighth one is the development administration. A related benefit of the study of comparative public administration has been a emergence of concept of developmental administration, which has become a key strength, okay, key strategy for holistic transformation of various societies. So it is accepted widely that development administration is a goal oriented and change oriented administration, and is the main engine of all round progress of her country. Okay, then administrative reform. So cross national experience of administrative reforms such as Britain, Jair, Indonesia, Bolivia, Sweden, and India have inspired the process of goal oriented administration change throughout the international community. Even international agencies such as the UNDP and World Bank have gained a fillip to this movement of administrative reform. Little wonder good governance has become steering strategy of administrative change in the large number of countries of non-Western world. Okay, then responsiveness, the overcome of system and ecological approach in comparative public administration has been a stress on input from the environment in terms of demand and support. The demand and aspiration of the common man and social group have taken a central position in analysis of the governance system. If it is known expected that outcome of administrative system in the form of decision and action should be consonance with their input. This approach has helped in making the administrative system more responsive to the people's needs and aspirations. Moreover, through through okay throughputs of an administrative system have made such system more rational in their approach and functioning. Then overcoming false impression. In traditional administrative theory, purely structure approach was adopted, and hence non-Western countries not having certain conventional structure of West were considered to be less developed. The structural functioning approach of comparative public administration has highlighted that there are common functions being performed by administrative system of most nation. In developing nation, there are not be one to one relation between structure and functioning, since a large number of administrative structure in in such nation are multifunctional in character. This insight has thrown new light in the competence of administrative system in developing nation. Okay, so in sum, the comparative study of public administration has positively influenced the intellectual development of the discipline of public administration and has broadened its structure, process, role and behavior एज सच. ठीक है, तो देखिए हमने मेनली क्या इतना सब पढ़ लिया है. इसमें मेनली हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है किसका, कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. तो हमने ये अलग अलग तरीके से जाना है कि किस तरह से जो कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूज़ किया जाता है. जैसे कि साइंटिफिक स्टडी हो गया, देन इंटर डिसिप्लिनरी ओरिएंटेशन के तौर पे, स्ट्रेथनिंग द इकोनॉमिक इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन के लिए, देन यूनिवर्सलाइजेशन के लिए, मोर रैशनल यूज़ ऑफ फॉरेन असिस्टेंट के लिए, लॉजिकल, अगर किसी देश से हमें असिस्टेंस चाहिए या किसी हेल्प चाहिए मेनली, तो हम उसका किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, व्हाट आर दी मोर रैशनल यूज, ओके, ऑफ द फॉरेन असिस्टेंट.
देन होलिस्टिक अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के लिए जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। देन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर एंड दिस इज द प्रोसेस मेनली, ओके। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने के लिए भी हमें कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमें पता चलता है व्हाट आर द लिमिटेशन एंड हाउ दैट लिमिटेशन कैन बी टैकल, सो दैट कैन बी ओनली थ्रू दी कंपेरेटिव पब्लिक एनालिसिस, ओके। मतलब हम एक कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एनालिसिस करके हम बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। देन रिस्पॉन्सिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओवरकमिंग फॉल्स इम्प्रेशन, ओके। तो इसके बचने के लिए भी हम मेनली कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, का हम इम्पोर्टेंस इसमें हो जाता है, ओके। मेनली इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कि वेदर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट ऑफ द एनी पर्टिकुलर नेशन इज परफॉर्मिंग well or not, okay, that also we will compare with two nation. So likewise these all are the mainly significance of the comparative public administration. At last we come to the conclusion, so let's start. देखिए, this unit has discussed the evolution of the comparative public administration since post Second World War time to its current status and its meaning, nature, scope and significance, ठीक है। हमने सेकंड वर्ल्ड वार के बाद किस तरह से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी शुरू हो गई, ठीक है, उसका इवोल्यूशन, मीनिंग, नेचर, स्कोप, ये सभी हमने यहाँ पढ़ लिया है। इट हाईलाइट द को एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्मेटिव स्टडी, एम्पेरिकल स्टडी के बारे में बात किया था, आइडियोग्राफी स्टडीज़ के बारे में बात किया था। देन nomothetic study, non-ecological study and ecological study in the discipline of comparative public administration, and this coexistence represent the nature of the discipline, the structure, process, okay, and behavior impact environment of public administration. When examined from the comparative perspective, define the scope of comparative public administration, and finally comparative public administration contributing to the science of public administration, so reinforcing the interdisciplinary and ecological orientation, okay, calling for development administration and administrative development, has positively influenced the intellectual development of the discipline of public administration and has broadened its structure, process, role and behavior, okay, of the public administration, okay। सो इस तरह से हमने कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में समझा है, उसके मीनिंग, नेचर, स्कोप, एवरीथिंग वी कवर इन दिस चैप्टर, ठीक है, इन वेरी डिटेल मैनर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मेनली पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज यूनिट नंबर 2, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।